Hello student, today I am going to explain about the equal and equivalent set. So first you see what is the equivalent set. Two set will be equivalent if the number of element will be same, or you can say the cardinal number of both sets are the same, then the set said to be equivalent set. Suppose A is given 1, 2, 3 and B is given A, B, C. Then number of element in A is 3, number of element in B is 3. Means cardinal number of set A is 3 or cardinal number of B is 3. So the both sets said to be equivalent. Another way you can listen that equivalent set is not equal set, but equal set is always equivalent. कोई equal set है तो equivalent भी होगा, equivalent है तो equal नहीं होगा. फिर मान लो कोई सेट, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल ओके. A x such that x is letter of word flower. In your book it is given. So what will be set? F L O W E R or B x such that x is letter of word follower. If you make the set, what you will get? F L O is repeated here, W E and R. I have written here small letter, not matter this, small and capital. Is it clear? So you will see both sets. Cardinal number of this set is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or cardinal number of this set is 6. This set is said to be equivalent. And I want to explain about the equal set. Then A and B both set is said to be equal set also, because the elements are the same in the both set. So this is equivalent and equal. Clear? Now see equal set. Two sets are said to be equal set if number of elements are same in the both set. Suppose A is given here, A, B, C, E. Here B set is given A, B, C, B, E, A. Clear? But this is not in the proper way. Elements are written here. You write in the proper way A, B, C, E. You will see set A and set B. Elements are same in the set A and B, so both sets are the equal set. Or equal sets are always equivalent set. Another A, x such that x is x less than 5, x belongs to natural number. What will be this? 1, 2, 3, 4. B, x such that x is
is less or equal to 4, x belongs to natural number. So what will be this? 1, 2, 3, 4. So number of elements in A and B both are same. This set is said to be equal set. Clear? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Elements are same. So both sets are said to be equal set. Or equal set are equivalent also. Then after that, subsets and proper subsets. Two set A and B is given. Two non-empty sets A and B. Not matter A is non-empty, B is non-empty set. So how can you write this subset? A is said to be subset of B if every element of A, this is symbol of the subsets. A is said to be subset of B if every element of A lie in B also. मैं A का पूरा एलिमेंट B में लाई करे तो उसको क्या बोलते हैं? सबसेट्स. इफ सपोज कोई भी सेट ले लो, यहां पे एलिमेंट 1, 2, 2 दिए गए, इसके सबसेट्स क्या होंगे? इफ बी एन बी इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स equal to 2 raised to power 2 equal to 4. What will be the subset? ये हो जाएगा empty set. Empty set is subset of every set. फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर 2 and 4. Every set is subset of itself. देखो 2, 4 ये सेट है और सॉरी 1, 2 सेट क्या है? 1, 2. 1, 2 अपने आप का भी सबसेट है. ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा. आई विल टीच यू दिस. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अगर किसी एलिमेंट में मान लो लेट एनी सेट ए, ठीक है, और n a equal to cardinal number of this set is n. This not this n is representing cardinal number of this set. तो number of subsets equal to 2 raised to power n. You can find if there is a 3 element 2 raised to power 3, there is 4 element 2 raised to power 4. In this way you can write the number of subset, or this is a way to write the subsets. Okay, now see proper subset. B is any set is given. B is any set. ये मान लो. A is said to be subset of B. I have told you if all element of B will be existing, all element of A will be exist in the B. A is subset of B if all element of A will be exist in the B. तो मैंने बताया था तुमको इसके प्रीवियस में 1, 2 एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है, तो 5 भी एम्प्टी सेट भी है, फिर 1 का भी सेट बनाया, फिर 2 के साथ सेट बनाया, फिर 1, 2 के साथ सेट बनाया, तो 1, 2 वाला भी उसका सबसेट है क्योंकि 1, 2 भी एग्जिस्ट किया. यहाँ पे मान लो वही हम ले लेते हैं कि B कोई
सेट हो गया, 1 2 ही देख लो, तो सब प्रॉपर सबसेट्स क्या होगा? Any set is not proper subset of itself. Clear? Any set is not proper subset of itself. तो empty set भी होगा, फिर 1 भी होगा, फिर 2 भी होगा, लेकिन जो 1 2 अगला होगा वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा. Any set is not proper subset of itself. Means there is suppose two sets are given, A and B. So all element of A will exist in the B, but in the B at least one element will be extra, at least one. तो इसमें हम लेते हैं तो ये दोनों एक्स्ट्रा हो गए, इसको लेते हैं तो 2 एक्स्ट्रा हुआ, इसको लेते हैं तो 1 एक्स्ट्रा हुआ, एटलीस्ट 1, कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए. मान लो कोई सेट हमने ए लिया, यहाँ पे ए बी सी हो गया, तो प्रॉपर सबसेट्स तो सबसे पहले एम्प्टी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, एक एक के साथ. फिर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा, फिर सी ए हो जाएगा. बट एनी सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो विल नॉट राइट हियर. सबसेट पे तो लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट पे नहीं लिखेंगे. तो यहां पे देखो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 raised to power 2 minus 1 इक्वल टू 3, तो 3 आ गया. यहां हो जाएगा तो 2 raised to power 3 minus 1 इक्वल टू 8, ये हो गया. 1 2 3 4 और सॉरी 7, 1 2 3 4 5 6 7. This is clear? Okay. I suppose it is clear what is the subsets and what is the proper subset. Or this is symbol for the proper subset. A is any set or that is proper subset of B, then you can write this way. A is proper subset of B. Or is subset of B in this way. कुछ बुक्स में ऐसे है, A is subset of B, A is not equal to B. कई जगह अलग अलग तरह से है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट्स हो गए. दिस इज क्लियर? तो सिंबल अलग अलग है, तुम्हारे बुक में ऐसा है, A is subset of B, you will use this. A is proper subset of B, A is subset of B, A is not equal to B. Empty set already I have explained to you. Number of proper subset, how can you get? If n cardinal number of A is n, so number of proper subsets equal to 2 raised to power n. A number of subsets 2 raised to power n. Clear? Power of the set. What is the power of the set? Set of all subsets is known as the power of set. A any set is given. A, B and C, 3 elements are given. The set of all subsets, तो all
can write subsets. Empty set A, B, C, AB, BC, CA, ABC. 2 raised to power 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All are the subsets. और अगर इसको हटा दे, रफ कर दिए, यहां लिख दिए पावर ऑफ सेट ए. हियर द curly bracket is needed. Now it is become the power of set A. Set of all subsets. Set of all subsets लिखने के लिए लास्ट में curly bracket होगा. Subsets कैसे लिखेंगे? इसके पहले मैंने लिखा. Now this is the power of set A. Now universal set. So what is the universals? Universal means universe. Clear? So universal set what is represented by U are the set. This is symbol for the universal. Clear? A set that contain all element under the consideration in a given problem is called a universal set. मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का पूरा एलिमेंट किसी और सेट्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. तो मान लो ए हमने कोई ले लिया ए बी सी. अब बी कोई सेट ले लिया बी सी ई एफ. इस तरह से बहुत से सेट लिखे गए हैं. तो व्हाट विल बी यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट विल बी x such that x is an English alphabets. क्लियर? तो सब सिंपल है, चीजें हैं, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. और आई कैन रब इट. यह तुम्हारे बुक में अगले पेज पे दिया है. और सबसेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ द रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर. क्लियर? Positive real number is subset of the positive, rational number is subset of rational number, rational number is subset of real number. सब सिंपल कंसेप्ट है. इंटरवल की बात मैं करता हूं क्योंकि तुम्हारे बुक में कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं. इंटरवल्स, तो 10th में पढ़े भी हो. A is less than x less than b. We can write here x belongs to AB. This is known as this bracket is known as the open interval. X belongs to the open interval AB. On the number line you can plot here. Suppose this is A or this is B. So this will be hollow or this will be hollow. Correct? Second, A is less than x less than B. So you can write x belongs to the closed interval A and open interval B. This side closed, तो A लेंगे and B नहीं लेंगे, B से. और you can plot on the number line here. तो this will be dark, ये dark हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? hollow हो जाएगा. और इसके बीच का पार्ट हो जाएगा, जो भी होगा, इसके बीच का पार्ट होगा. करेक्ट? इसके बीच में आएगा. इज इट क्लियर? थर्ड वन विल बी, तो ये भी डार्क हो जाएगा और ये भी डार्क हो जाएगा और ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा. आई सपोज इट इज क्लियर. फोर्थ, ए
If this side, here it will be hollow or it will be dark. Or this will be open, this will be closed. Now I suppose it is clear. Close open interval, close interval, previous one was the open interval. This is this side close, this side open. To close, open. Now this is open, close. X less than B. This will be hollow on this side. Correct? So you can write X belongs to the minus infinite to B. 6. X greater than B. Greater or equal to B. You can write here B is dark here. If only this is given, this will be hollow. ये hollow हो जाएगा और यहाँ पे हमने कर दिया कि greater or equal, so it will be dark here or here all value will be. How can you write? X belongs to the B. What will be this? Close interval or this will be open interval. I suppose it is clear what is the system of interval. Now you will see the questions who have not brought the book now till not bought the book. If you have bought the book, very good. You have the book, very good. If you don't have the book, I will send you the photocopy, not the photocopy. This on the WhatsApp. I will send the photo of the 1.2 exercise. From that you can do. But you better you manage the book. This week I will do this. तो एक्सरसाइज देख लेते हैं. 1.2 एक्सरसाइज 1.2. ठीक है. In the following state A equal to B or not. अब जैसे कि पहला क्वेश्चन ही है कि A एक्सरसाइज गिवन x such that x plus 2 equal to 3 और B x such that x belongs to natural number and is or x is less than 2. You can write this. A सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 और इसको करेंगे तब भी 1 आएगा. तो बोथ आर द इक्वल सेट. दिस इज क्लियर. So in this way you will try to solve, then you can find equal or equivalent set. This fourth part. A x such that x belongs to natural number. No. This is the fourth. X belongs to integer or x square less than 4 equal to 4. B, set B is given x such that x belongs to real number and x square minus 3x plus 2 equal to 0. तो अब ये इंटीजर है तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -1 का स्क्वायर भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 0 का भी करेगा, 1 का भी करेगा, 2 का भी करेगा. तो वी कैन राइट -2 -1 0 1 2. यू कैन राइट इट इज रियल नंबर. नाउ फैक्टराइज दिस. तो x स्क्वायर -2x minus x plus 2 equal to 0. तो x minus 2 और x minus 1 equal to 0. तो x equal to 2 और x equal to 1.
तो set B will be 1 2. So now you will see this set is not equal, A is not equal to B. They imply that A is not equal to B. Clear? करेक्ट. अगर यहां पे नेचुरल नंबर लिख दिया जाता तब ये दोनों सेट A और B इक्वल होते. बात को समझो. नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सेट क्या हो जाता? 1 2, ये इक्वल हो जाता. दिस इज क्लियर? ओके. Second number question, A, B, C state whether the following statement is true or not. A is subset of B, false. A is subset of C, false. B is subset of A, true. B is subset of C, 2 3 4, no, false. C is subset of A, correct. C is subset of B, false. B is equal to C, false. और phi is subset of B, तो empty set is subset of all sets. Clear? और ninth दिया, second का ninth, A and B are equivalent, no. B and C are equivalent, yes. Number of elements are same. You can try to do. और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो. 4 belongs to 4, क्या दिया पहला पार्ट, तो 4 belongs to, यहां होगा 1 2 3 4, ये करेक्ट है. करेक्ट. और -5, तो माइनस यहां दिया सेकेंड में, -5 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या दिया है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6. और ये थर्ड केस, दिस इज द सेट, नॉट द एलिमेंट. दिस इज द कंप्लीटली सेट. If two are taking their element, is subset of 2 3 4. I suppose now till it is clear to you. और फोर्थ में दिया A B C और here B A C, both are the equal. Fourth A B C B C A equal. In this way you will try. Or 4 true or false you can try. Fifth is also. 6 is the same type of question you can try to solve. If you are getting, you can ask. You are getting problem. कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को पूछ सकते हो. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 9, ए कोई सेट है -1 0 2, तो पावर ऑफ सेट ए is set of subset of this set A. तो सेट इसका सबसेट क्या होगा? -1. तो पहले तो एम्प्टी हो जाएगा. -1 0 2, अब हमने ABC का दिया था. फिर -1 0 0 2, -1 2 और -1 0 2. all are the subset of the this set A. तो set of all subset, this side curly bracket and this side curly bracket, then you can get the solution. If it is asking power of the set, subsets, about the subset,
तो सबसेट अगर लिखना होगा, इसका सबसेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, -1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, because any set is not the proper subset of itself. याद रखो. So in this way you will try to do up to the question number 21. I will scan it, or then I will send on the WhatsApp. Clear? Okay, God bless you.